नमस्ते। आज एक बार फिर मेरे साथ लखन मेहरोत्रा साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, और मेरे लिए एक ऐसा खजाना, एक ऐसी डिक्शनरी कि मुझे अगर विदेशी मामलों में नहीं, भारत के भी कई मामलों में कभी कहीं मैं फंसता हूं, कुछ समझने की जरूरत होती है, तो शिक्षक की तरह मैं इनके पास पहुंच जाता हूं और ये मुझे उसमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देते हैं। लखन मेहरोत्रा सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। सर, हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं कि चुनौती 2025 या चैलेंजेस 2025, कुछ लोग उसको एजेंडा 2025 भी कह रहे हैं, अलग अलग विषय में। अब अभी मोदी जी अमेरिका की, अब वो सक्सेसफुल है कि नहीं सक्सेसफुल है, ये सबका अपना अपना परसेप्शन है, अपने अपने चश्मे से सब लोग देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका के लिए बहुत सक्सेसफुल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो इंडिया के लिए भी सक्सेसफुल है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आपके हिसाब से आज जहां हम खड़े हैं, इंडिया एज अ कंट्री, के दो या तीन मुझे वो चुनौती बताइए जो एज अ एज अ विदेश नीति के हिसाब से हमारी चुनौतियां हैं। क्या हैं वो, कितना रिजॉल्व होगा वो अलग बात है, लेकिन आपके हिसाब से 2025 में हमें इस दो या तीन चीजों को एड्रेस करना ही होगा, और वो हमारे लिए एक बड़े चैलेंजेस है। लखन सर। देखिए, 2025 has started in an atmosphere of the war continuing in Gaza and in Ukraine. Behind that, as soon as Mr. Trump was elected, he declared that within 24 hours he will stop these wars. Now, India's challenge in this entire situation is, and that is a big challenge, as to how to keep a balance in her relationship with the Soviet Union, former Soviet Union, now Russia, and America. And America, when I say America, Trump's America. Now we are in a different uh, chapter of the history of America. ट्रम्प का जो कॉल है, that is America first. Now, by any definition, therefore, India cannot take the first place there. यस। His sights are not on India as much as they are on China and on Putin. So, this will be a challenge to us, that we do not have the same eye and ear of Trump as we had during his first term, that we are not exactly in his priorities where we were at that time, but he is still quite interested in keeping India with him. That is not so much for ourselves, of course, we will gain by that proposition, but to keep a balance of power in Asia with America on top. And its relationship with China, I mean, it is in a phase of great uncertainty. Even if Trump makes up with China to some extent, as he has given indications and he talked to Xi, the point there is whether China will get on top of the USA or USA will remain power number one in the world. That is a great worry in the American mind today. And that is a great worry of Trump. It is actually the centerpiece of his foreign policy. Now, if that is the centerpiece of his foreign policy, he will try to adjust us somewhere in that policy. Now, he knows that we have differences with China on the border, but he also knows that lately there has been some progress in our attempt to normalize relations with China. In Denpasar and the Pangongsu and Demchok areas,
they have taken some steps which are part of a confidence building measure. I won't say they have negated their advances that they had made in the year 2020, but but they seem to be in a mood to somehow or the other draw India back from the embrace of the USA in its eyes. जी Now that is challenge number one. How do we make advances in our relationship with China without raising the suspicions of Trump's America and disturbing his calculations? Number two, the equation between Putin and China is very critical to the global calculus of power. Now, when he says he will stop war in Ukraine, you will agree with me that it is meant to come closer to Putin and to give a message to Ukraine that, look, agree with me, come to terms with Putin, you cannot get your territory that you have lost back, but some compromises can be struck if you would be with me. I will work out a compromise for you. जी His problem there is whether Ukraine will heed his voice. yes So far, there are indications that they are saying we are a sovereign country, we will decide our own future, and nobody else can do that for us. जी जी सर मैं जी Ukraine remains on the losing end. Now, in this entire gamut of relationships, India has moved very carefully in the past, but now it will have to be even more careful because you are going to get promises of defense supplies from the USA, which will be very critical to your military buildup. And you know the American habit. They promise it and then they stop the pipeline somewhere where they consider that their interests are not being served. So it is not a very straightforward affair. So we will have to move very cautiously. We will have to move very carefully. We will have to build a relationship with Mr. Trump as we need to, as we want to, but without wanting to disturb our relationship with Russia and without disturbing the process of a little advance in our relationship with China, which we have entertained over the last 1 month or two. So that जी should be. जी सर मैं एक चीज और पूछूंगा जो ट्रम्प साहब का जो टोटल रवैया रहा है मैं दो तीन चीजें जो मैं एज अ स्टूडेंट डब्ल्यूएचओ से उन्होंने कहा मैं विड्रॉ कर लूंगा मेरा बहुत पैसा लगता है फ्रेंच डिक्लेरेशन से मैं विड्रॉ कर लूंगा क्योंकि 2030 तक जो कमिटमेंट्स हैं कार्बन के वो कमिट नहीं कर पाएंगे डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स हैं कि भाई जो डेवलपिंग नेशन है उसके टैरिफ और इसके टैरिफ को बराबर नहीं किया वो उससे भी विड्रॉ कर रहे हैं वो नेटो को वो समझा रहे हैं जेलेंस्की को कि तुमने नेटो में ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी तुम्हारी टेरिटरी भी गई और हम $200 बिलियन दे रहे हैं हम क्यों दें मतलब ही इज वन जो जो बिल्कुल ब्लेटेंटली इन सारी चीजों को रीराइट कर रहे हैं मतलब आई हैव नो कमिटमेंट मैं जो चाहूंगा वो करूंगा मेरा कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट कुछ वो नहीं है इसको जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे देख रहा है मतलब द एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इट नहीं देखिए everything that Mr. Trump wants to do will open a new chapter in the contemporary हिस्ट्री world. यस He has shaken the world. यस He has shaken everybody. He has shaken the best of U.S. friends, that is Europe. You look at the statements that he has been making about Europe and then once has made yesterday in Paris. They want relationships at their terms. And Trump is very good at that.
Trump is following, in my previous conversations with you, I talked about China. Yes. And I told you that Mao's greatest strategy was to take two steps forward and then one step backward. Trump is doing exactly that, hitting very hard, then bringing them to talk to him, make some concession, and send them back very happy. This is what he's doing. His major problem is as a businessman. He's a businessman through and through. And he wants that this trillions of dollars of debt that America has, it cannot afford it. It is the most indebted country in the world, although it is the most advanced also. And he doesn't like it. And when he says America first, he will strike down anything that comes in the way of his building the economy and putting it in shape as he wants it. I am not saying that under Biden the economy was not thriving, but Trump's targets are much, much, much stronger than Biden's on the economic front. Yeah. So it is a question of two things. In political terms, to ensure that America remains at the top. And in economic terms, that it follows a policy which will reduce its indebtedness, which will increase its influence in the world by getting the value of the buck that he would spend, and the buck should pay. There are no free luncheons, as Americans would always tell you, and Trump is very good at that. Yeah. And the third target about him is very, very clear, that whatever be the global order, the power is in my hands. जी मैं सर मैं And एक दो जी जी सर प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिएगा सर नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो जो आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूएन के ऑर्गन्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इवन द IMF and the World Bank are highly dependent on American contributions, जी जी The contribution of America to the functioning of the UN itself makes it very dependent on America. I mean, it is. So he knows the reins of power are in his hands, and he will use them to his advantage. मैं सर मेरी नॉलेज है और जितना मैंने पढ़ा है, करीब 33 ट्रिलियन का उनके ऊपर डेट है। खैर वो एक अलग इशू है। मैं एक वो और सरप्लस है जी, हमारे ट्रेड का सरप्लस जो है वो 36 बिलियन डॉलर्स का है। ओके, मैं सर एक चीज और जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं इमिग्रेंट्स की बात इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, इमिग्रेंट्स इज वो, और उसका कोई लॉजिकली तो यही है कि भाई अगर आपके हैं तो आप यहाँ चले जाएंगे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने भेजा इमिग्रेंट्स को, बेड़ी लगा के, हथकड़ी लगा के सेना के जहाज में, वो थोड़ा आपको डराने वाला था, धमकाने वाला था, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहां पे जब हमारे जो भी MEAs हैं वो बिल्कुल साइलेंट है इस पे, बहुत एक छोटा सा प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन फिर वो ऐसे भेज रहे हैं। जब वो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको अंडरग्राउंड कर दिया जा रहा है। आज की रिपोर्ट है कि गुजरात के इमिग्रेंट्स का वेयर अबाउट्स ही नहीं पता है। सरकार के लोग जाके कह रहे हैं कि आप किसी से कोई इंटरव्यू मत दीजिएगा, कुछ मुंह नहीं खोलिएगा। मैं इमिग्रेंट्स पे भी थोड़ा आपका समझना चाहूंगा कि ठीक है वापस भेजो, लेकिन जिस ढंग से वो ट्रीट कर रहे हैं वो थोड़ा आपको नहीं लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं तो सहमत हूँ। आई थिंक it is an assault on the dignity of a nation to have its citizens treated like that. They are there illegally. Law must take its course, but for the law to take its course in this particular fashion is not agreeable to anyone. Not only India. It won't be agreeable to anyone. And
And I hope that when the next batch is now landing in Amritsar, it will come differently. This was my fond hope. It should, because the first batch came right on the eve of Mr. Modi's departure. This is coming after Mr. Modi's talks with Trump, and which have the brand of success on them. And the government of India wants to keep that impression up. And if the next batch comes exactly chained as the last one was, and even their walking was in chains. That would be humiliating for. I think even our Prime Minister will find it a little difficult to digest it. So it is all right to say that this is a norm, this has happened before, but I think uh, somewhere or the other, it will hurt our leadership. I'm मैं quite certain जी सर because because India is a highly sensitive nation. I mean, जी it doesn't ignore these things. जी सर, मैं एक चीज और जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ। मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि वहीं पे कोलंबिया के, बहुत छोटा देश है हमारे मुकाबले, उसके उतने वो नहीं है। जो कोलंबिया की प्रेसिडेंट है, एक यंग महिला, उन्होंने जिस ढंग से उनकी स्पीच आई, रिएक्शंस आए, हमें कहीं ऐसा इंप्रेशन है कि भारत कुछ इज बेंडिंग बैकवर्ड टू प्लीज ट्रम्प। मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि हम इतना ट्रम्प के आगे नतमस्तक क्यों हो रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन है। आप एज अ डिप्लोमेट, आपको क्या लगता है कि व्हाई वी आर सो मच बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प? क्यों इतने नतमस्तक है? I would not call it bending in front of them. मोदी साहब के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, ट्रम्प हिमसेल्फ has said that he is a very hard negotiator. So that is not an empty phrase. I think the prime minister must have negotiated with him quite hard. Uh, but for it is not an appeasement policy, but it is to try to understand Trump and divert his policies uh, towards India in a manner that he can move away, he can create a shift in his attitude that he is showing towards others. He should know, and I'm sure our Prime Minister must have given that impression. He should know that we are not a Latin American country. He should know that we are not at their feet. He should ओके, know that uh, we can sustain ourselves even without America and American help. American जी help is helpful, but it is not so critical that we should bend backwards and at the cost of our dignity and सेल्फ रिस्पेक्ट, national आई विल से। pride and national pride. यस, Uh, करेक्ट। I don't think that that is being done, but there might be an impression somewhere or the other as to why it is so. If it is so, I would say if it is so. जी, मैं सर एक चीज और पूछूंगा। ये जो वहां पे कल पे भी हुआ है, जो पन्नू वाला मसला है, उस पे मैं इसलिए इस बात को ला रहा हूं कि वो कल वहां पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया खालिस्तान सेपरेटिस्ट पे, और पन्नू को वो अपने स्वेरिंग इन में पन्नू की शक्ल दिखाई देती है, उसके नारे सुनाई देते हैं। एंड जब उससे कल ये पूछा गया ट्रम्प साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनी यूएस सिटीजन को हम एक फेयर ट्रायल, मतलब वो अपना यूएस सिटीजन को डिफेंड करने की बात करते हैं। पन्नू वाले उस पे क्या आपको ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिकली हम थोड़ा फंसे हुए हैं, क्योंकि उसपे उनके पास सारे एविडेंसेस हैं, और हम उसको उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास यादव वॉज वो ठीक नहीं था, लेकिन विकास यादव था, और कह रहे हैं कि अब वो हमारे सर्विस में नहीं है, और उसका पुराना खराब था। लेकिन क्या उसमें हम थोड़ा, वी आर ऑन द रॉन्ग साइड, वी हैव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग साइड? देखिए, any Indian national in Pannu situation puts us on the back foot. It ओके, is not just Pannu. It is not just a servant of the former government servant. It is any citizen of India.
being kept in the American prison on a charge of intelligence is a tough proposition for India to resolve. And they will not. I am quite certain that whether they have shared all the evidence with us or not. I think they have. I do not believe that without any legitimate ground, they would have put Pannu behind the bars. And they are not extraditing him. They are not allowing him to move away from there. We have no access to the person in the way that we want. They must have something against him, which puts him in a category that that must be treated the way they are treating him. I cannot say because one can merely guess. The government of India has denied that they have anything to do with what he has done, and in the face of it, I cannot I cannot go forward and say that the government of India is wrong. But to a general view, for taking a general view, it appears that America must have some very strong grounds to do what they are doing. जी सर, मैं एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं, और वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से लोगों के ने कल ये जो वीडियोस देखे उसमें एक तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और उनके साथ हमारा पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे एनएसए साहब, हमारे मंत्री जी और पूरी टीम है, 8-10 लोगों की सूट वूट पहन के, 3 पीस, और बिल्कुल ठीक से चाक चौबंद बैठे हैं। और एलन मस्क साहब आ रहे हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं, कोई 2 साल का, कोई 6 साल का, कोई 4 साल का, कोई यहाँ चढ़ा हुआ है। मतलब द वे ही इज कंडक्टिंग द एंटायर थिंग, मैं इसको इस रेफरेंस में पूछ रहा हूं। और दूसरी तरफ जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है अडानी जी को लेके, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, तो वो एक उसमें ट्रंप उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं और वो कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न मैंने पूछ रहा हूं कि अडानी जी का मामला हिंदुस्तान में व्यक्तिगत नहीं है, सेबी के इज इन्वॉल्व, इतने लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, इतने इंस्टीट्यूशंस का पैसा इन्वॉल्व है। वहां पे एक अमेरिकन कोर्ट में उनके अगेंस्ट इंडाइटमेंट है, मतलब बहुत सी चीजों के साथ। क्या इसको हम इग्नोर कर सकते हैं? मतलब मोदी जी के ये कह देने से ये व्यक्तिगत मामला है, क्या इसको वो है, या ये भी एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमारे और अमेरिका के जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक इशू है जिसको एड्रेस करना ही पड़ेगा? देखिए, मैं इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा मिस्टर आनंद वर्धन जी। एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन अडानी। नाउ if I will first speak about the American point of view, it is expressed by the resolution of some of the congressmen who have moved the Congress and said that Adani's case must be explored more deeply. आपने देखा होगा वो। जी जी। This is their viewpoint. They know that something has gone wrong somewhere and it needs to be explored. And if it is there, it needs to be exposed. On the Indian side, Adani of today is not the same as Adani of 10 years ago. Adani's assets are not the same as they were 10 years ago. Adani's association with the Prime Minister is very well known. And I'm sure the Prime Minister will also not deny it. I think during his campaign, Adani had come to given him some help. That is the first campaign. I am not saying that the government of India is in any case reliant on what Adani is doing. But in personal terms, there may be some, some certain reasons why the Prime Minister would move things in a manner that Adani is not hurt. This line of action
they will take, which I think they are taking. Now, what is the truth behind it cannot be asserted until some investigation is done. And there is no investigation on this side. And on the American side, there has been an investigation, and they feel they have some reasons to explore the matter further. I won't say to indict him or to anything, to explore the matter further, I would say. And I think that gap between their position and our position will remain. Okay. That's what I think. And for the Prime Minister, our Prime Minister would probably ignore any suggestion that Adani has done any wrong. I think so. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। एंड आज के सेशन में नहीं, एक दिन हम लोग को आपसे केवल चाइना समझने के लिए बात करनी, क्योंकि चाइना से हमारे डायमेंशंस फिर चेंज हुए हैं, बहुत से चेंजेस हुए हैं। आप तो चाइना को यू नो इट एट द बैक ऑफ योर हैंड, मतलब जितना चाइना पे आपका अध्ययन है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं दर्शकों को बता दूं कि यू आर वन ऑफ द फ्यू वंस जिसने चौवन लाई और मौज से तुम के साथ चाय भी पी है और खाना भी खाया है, क्योंकि आप और ऐसे डिप्लोमेट जिन्होंने भारत के राजनयिक संबंधों को फिर से पटरी पे लाने का एक अहम रोल आपका किया था। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बस इतना ही कह सकते हैं कि विथ ट्रम्प इन ऑफिस हम सब लोगों को वी ऑल आर वेरी कीनली वॉचिंग क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की तस्वीर को वो बदलने के इरादे से आए हैं। चलिए देखें आगे आगे होता है क्या। थैंक यू सो मच सर। I told you that you have shaken the world. जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू।